माने भाबुचंती जे डीएनएच इज वेरी इजी कोर्स बिकॉज इट्स अ वेरी मीन्स डिप्लोमा कोर्स बट आ भितर जो जिनस अच्छी से जदि आम कंप्लीट करदे तो यू आर एलिजिबल फॉर द डायटिशियन तो एते भावतुनि ये डिजीज टू आरंभ करके थेरापेटिक न्यूट्रिशन टू आरंभ करके ईच एंड एव्री डायट मेकानिज्म टू आरंभ करके एवरीथिंग इज देयर दैट्स इट in every classes you try to all of you try to attend the each and every classes conducted by the all the faculty members because जदि आपण क्लास अटेंड न करिवे तो को एंगल रो क्वेश्चनरी हबो आपण जानिबेनी एंड यू आर नॉट एबल टू राइट डाउन द आंसर आल्सो एंड गोटे थर जितेबले आपण क्लियर करि परिबेनी पेपर सेटा एमती आपनकर चाली थिबो म कहूची जेते भाबुचंती जे एटा जेते इजी एंड सुविधा डीएनएच से सुविधाजनक पाठ ये नुह ताको सारा पर भी आपंकर पुणी आउे रोचे कौन प्रोजेक्ट वर्क रोचे असाइनमेंट तो केते लिखले भी जमती माने सबूक आप पढ़ी पढ़ी की बाहर करके खोजिकी लिखे आ भूल सुधा केबे भी आपण माने असाइनमेंट को प्रिंट फॉर्म रे प्रिंट ये देवे ना सब बड़े निज हाथ लेखा को ये करेंगे आ सब बड़े आंसर जेतिकी मार्क्स रो क्वेश्चन आपण को आंसर भी सेतिकी रहिबा दरकार ताठू जेमते एक्सीड न करिवो अब मु 5 मार्क रो क्वेश्चन पचारि थिबो एंड आपण माने एमती करिबेनी जे 10 पेज आंसर लिखि बसिथिबे 5 मार्क पाइबा एमते गोटे बही बने कि खाता बनेबा एते दरकार नै जस्ट यू लुक एट द मार्क केते मार्क रो क्वेश्चन एवं आपण को पचारि 2 मार्क्स रो क्वेश्चन तो आपण ट्राई करेंगे 2 मार्क्स आंसर जमती आपनकर कवरेज कला क्लियर बुझी पारले ना बुझी पार नांते यस आउ समस्तंकर कोन किछ असुविधा होची पार्टी सुना जाउनी कथा कोन असुविधा किछि के ना मैम बुझिएला तो आज्ञा मैम क्लास रे आपण इंटरैक्टिव करिवे एमती नुह जे साइलेंट के रवि यस्टरडे आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कोलेस्ट्रॉल कोन काली हम जानि चंती बुझेतली मु yes so cholesterol is a form of lipid and fatty like substance sterols रे जाय मोटी तेटा cholesterol दा से गुटी लाउडली yes sterol ले जाए cholesterol रा गोटे fatty substance lipid and it is also a hormone also cholesterol hormone production lipids category रे जाए cholesterol is nothing cholesterol is a fat like substance cholesterol is the good cholesterol and LDL cholesterol is the bad cholesterol that's it yes very good and it is different from the triglycerides mainly all the animal sources of proteins that contains the fat that contains the cholesterol and the cholesterol rich food are the milk egg and ghee butter cream meats these all are contains the richest sources of cholesterol and specifically the plant-based vegetables like the soya oil, groundnut oil, mustard oil, nuts and oil seeds that do not contain the cholesterol. And आमे माने देखी थी तो माने मार्केट रे देखु तो बहुत लोक माने मार्केट रे आजकल बहुत सारा प्रोडक्ट इन मार्केट बहुत सारा प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट इज अवेलेबल से माने से प्रोडक्ट ऊपर लिखि थांती इट इज कंप्लीटली मींस कोलेस्ट्रॉल फ्री कोलेस्ट्रॉल एमिति कोनोसी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट इट डज नॉट कंटेन द कोलेस्ट्रॉल ओनली एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स रे थाए जे कोलेस्ट्रॉल आ जो प्लांट बेस्ड आम प्रोटीन्स जहाँ भी खाती जमती कि आपंकर क्षीर हो दही हो कि आपंकर प्लांट रो जेकोसी जिनस लाइक मस्टर्ड ऑयल हो सनफ्लावर ऑयल हो कि आपंकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स एंड आपंकर राइस ब्रान ऑयल कथा कहतु कि जो ड्राई फ्रूट्स रही से किसी ऑयल आसे दिस बिकॉज इट कंटेन्स द टीजी triglycerides all the animal sources of protein it contains the cholesterol बुझिएला
बुझिला ना बुझिला नहीं? Yes, ma'am. And Yes. that cholesterol is Yes. present. Cholesterol play a very important role for our body because the in the cell membrane, the component of the membrane of the cell body, the it gives the cholesterol play a very vital role in our body. It is the structural component of the membrane of the body. In cholesterol, the breakdown of the cholesterol by the liver, it produces the bile salt. There are two type of bile salt is present. Bile pigment is also there. One is the bilirubin and another one is the biliverdin. Two type of. क्या बोला? क्या कंप्लीट करने के टाइम फिर से लग जाएगा 5 मिनट्स के लिए ना विश्वजीत एंड सस्मिता हेलो प्रियदर्शिनी Again, ma'am. हाँ जस्ट मो 5 to 10 मिनिट्स भितर पुणी जॉइन करुच्ची गोटे जस्ट टिके ये करुच्ची है ना काम अछि टिके गोटे मिनिट करले हेलो Hello. Again. हाँ समस्ते क्लास रे माने जॉइन करी थिबो के भी लीव होबनी हैला Again, ma'am. ओके ओके देखो नहीं देखा क्या देखा हाँ यार पर दिया कल मॉर्निंग में नहीं जाने से प्रॉब्लम होगा क्या फोन के ऊपर तो बोल दो फोन कर क्या आने का बोला जाने आने And also this cholesterol is mainly a breakdown of the cholesterol by the liver produces the bile salt, and bile salt is highly essential for the digestion and the absorption of the fat globules and some vitamins also. And cholesterol is also very essential for the synthesis of many hormones in the body. Seithipai आमे माने सब बेले जदि आमे एडल्ट लोक माने कोलेस्ट्रॉल जार ज्यादा रही गोटे एज पर एमती 48 45 पर
किंबा जो मानकर डिस्लिपिडेमिया रोची किंबा कौन प्रकार कार्डियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन रोची तो सेमानंको पाई कोलेस्ट्रॉल इज प्रोहिबिटेड बट जो माने ग्रोइंग चिल्ड्रंस अछंती जो माने रिप्रोडक्टिव पीरियड रे क्रॉस माने जाउछंती पहुंचछंती एट दैट टाइम यू हैव टू प्रोवाइड द cholesterol to the individuals. If you will not give the cholesterol, then the hormone will not be synthesized properly and hormone secretion will be disturbed. बुझे होची? Yes ma'am, ये तो काली एक्सप्लेन करथिले. हाँ बुझी पड़छन ना नहीं समस्त कोलेस्ट्रॉल बंद करवानी जो मानकर जो अनलेस अंटिल कौन प्रकार कॉम्प्लिकेशन ना से ही कॉम्प्लिकेशन नथिबा लोक माने आ जेमति गोइंग माने एडोलेसेंट पीरियड्स हो कि ग्रोइंग स्टेज रे हो कि ब्रेन रो डेवलपमेंट पई हो हार्मोनल सिंथेसिस पई हो हार्मोन रो प्रोडक्शन पई हो ए सब पई कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी बट जो मानकर डिस्लिपिडेमिया रोहुतबो कि हाइपरलिपिडेमिया रोहुतबो कि जो मानकर फैटी लिवर रोहुतबो कि कौन प्रकार कार्डियोलॉजिकल इश्यू रोहुतबो फॉर देम ओनली वी हैव टू कंप्लीटली प्रोहिबिट द कोलेस्ट्रॉल रिच फूड बुझिएला आज्ञा मैम amino acids, what is amino acids? Amino acids are the building block of the protein and food and body proteins contains 22 types of amino acid is present in our body and out of the 22 types of amino acid one is the essential amino acid and another one is the non-essential amino acid. What is the difference between essential and the non-essential amino acids? The quality of the food proteins depend on the proportion of the essential amino acid present in them. Animal proteins generally it contains the essential amino acid needed by the body and they are considered the superior in quality as compared to the plant protein. सब बड़े मो आरंभ भी कहे छी सब बड़े हम पे एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन टा जो आमे पाते सेटा होची फर्स्ट क्लास प्रोटीन बिकॉज सेतिर एब्जॉर्प्शन असिमिलेशन एक्सक्रीशन हम बॉडी रे बहुत भलो रे हेइथाय and the quality of the plant protein can be improved by combining the plant food with the other plant food or the animal foods like आमे सब बेले जो cereals सहित pulses रो combination करी खांती cereals रो combine करंती milk आज पर्यंत आज मध्ये बहुत सारा लोक क्षीर भात खाया पे पसंद करंती क्षीर भात रे राइस टा होची हमर cereals and protein होची राइस टा होची carb and protein होची हमर milk बहुत लोक अछंती साउथ साइड रे जो माने कि दही भात खाया पे भलो पांती जोटा कि हमर सेही cereals प्रोटीन रो कॉम्बिनेशन and जेतेबेले प्रोटीन आमे नउचंती the end product of the protein digestion in the body are the amino acids and after that the body will absorb the amino acids. Fatty acids, what is fatty acids? एवडा को होची न्यूट्रिशनल साइंस रो बेसिक जिंस you have to remember all these things. What is fatty acids? Fatty acids, the chief constituent of the fatty acid is your oil or fats. ए दिटा को जितरा में मिसै दियंती it will form the what? Fatty acids. Fatty acids होची two types रो. It's one is the saturated fatty acid and the another one is your unsaturated fatty acid. Saturated fatty acids depending on the number of hydrogen atoms present in the carbon chain. Saturated fatty acids केतेटा carbon atom रहिछि depending mainly it's depend on the number of hydrogen atoms present in the carbon chains and a molecule of triglycerides TG or the fat is made up of fatty acid and means one molecule 3 parts of the fatty acid and 1 molecules of the glycerol. It forms the what? Triglycerides. What is triglyceride? Tinita three fatty acid combined with the 1 molecule of glycerol, it forms the triglycerides. प्राय 1 मार्क क्वेश्चन रे डीएनएच रो प्राय आसीताए ट्राइग्लिसराइड्स रो फिल इन द ब्लैंक्स थाए कोन कोन कंबाइन हे कि ट्राइग्लिसराइड्स हेछि
So you have to write down there one molecule of the glycerols combines with the 3 fatty acid, it forms the triglycerides. Clear? बुझीला ना बुझी होनी कौन भी समस्त साइलेंट आज्ञा मैम आज्ञा मैम लिखि परिबे what is triglycerides? Triglyceride is the one number of glyceride with two fatty acid is known as triglyceride. Triglycerides is made up of by the one molecule of glycerols combines with the 3 molecules of what? Fatty acid. They form the TG. They form the triglycerides. And after the digestion of the triglycerides is present in our diet, in our food. After the digestion, it broken down to their constituent. It will forms the what? Same thing. See, glycerol of fatty acid body they say release after the digestion. Then what is essential amino acids? It's very important things. What do you mean by essential amino acid? Which is body cannot form, can synthesize. Those essential amino acid is those which body can synthesize. There are mainly two types of amino acids. One is the essential amino acid and the another one is the non-essential amino acid. Essential amino acid, our body cannot be what? Essential amino acid, the body cannot be synthesized in the body, and we will this essential amino acid we will found from the dietary sources. आम बॉडी ताको सिंथेसाइज करि पारे नाही. आमे जो खाद्य खाउतंती इट कंटेन्स द essential amino acids. Okay, what is fatty acids? What is fatty acids? Fatty acids is not, fatty is the organic compounds is composed of the oxygen, hydrogen and carbon, and it's mainly formed by the composition of glycerols, fatty acids and fat. It forms the fatty acids. बुझिएला ना नहीं? Fatty acid is nothing. Fatty acid is the organic compounds, organic compounds of the carbon, hydrogen and oxygen. In combination with the, it combines with the fat, fatty acid and glycerol. It forms the fatty acids. बुझिएला ना बुझिएला नहीं? प्रियदर्शनी करो. आज्ञा मैम. हाँ बुझी पारलो कौन फैटी एसिड्स? हाँ हाँ कौन कहिलो? कौन कहली एबे मो? फैटी एसिड माने कौन? What is fatty acid? Fatty acid is nothing. Fatty acid is the composition of what? Composed of one oxygen, carbon and the hydrogen, and it's mainly in the combination with the fatty acids, fat and glycerol. It forms the fatty acids. What is non-essential amino acids? कौन है पे पढ़ेली ना एसेंशियल अमीनो एसिड? व्हाट इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स? सस्मिता बेहरा, व्हाट इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स? essential which body cannot form or cannot synthesize, जोटा को body synthesize करि पारे सेटा होची non essential, and essential 11 जाउची, एथिरे 9 टा amino acid जाउची non essential.
non-essential amino acid is synthesized by our body. It will be not depends upon for the food. Outside dietary sources is not required for the non-essential amino acid. In our body, it can be synthesized in the body. This type of amino acid, our body will be synthesized itself, and it does not have to be provided by the any kind of dietary sources. Okay, बुझेला ना नहीं? Triglycerides is the three fatty acid combined with the one molecules of the glycerol. It forms the triglycerides. Sagar sir, थोड़ा मैम आपणकर म्यूट हो जाइए। Now I will discuss about the micronutrient. Micronutrients are broadly classified into these vitamins, minerals. Okay, I already discussed about that food is mainly divided into the two types. One is the macronutrient. Diet is mainly classified into the two categories. One is the macronutrient and the other one is the micronutrient. I already discussed about the macronutrient, that is the what? Carbohydrate, protein, fat and water. These all are comes under the macronutrient. Now I will discuss about the micronutrient. Micronutrient is your vitamins and minerals. What is the vitamins? Vitamins, there are two types of vitamins. One is the fat soluble vitamins and another one is the water soluble vitamins. Vitamins means life that mainly helps in the growth and the maintenance of our body and protect against the different type of diseases. And vitamins is nothing. Vitamins is a organic compound, and that compound present in very minute quantity in the food. Vitamins are different types, that are the soluble in the water, while other are soluble in the fat. They are classified in mainly two types. One is water soluble vitamins. Water soluble vitamins are readily soluble in the water, and the fat soluble vitamins are readily soluble in the whey. Fat soluble vitamins is mainly soluble in the fat. What is fat soluble vitamins? What is fat soluble vitamins? Vitamins is nothing. Vitamins is your micronutrient, and vitamins are the what? Organic compounds
And mainly vitamins is broadly classified into the two categories. One is your what? One is fat soluble vitamins, which is readily soluble in the fat, and another one is your water soluble vitamins. This water soluble vitamins is readily absorbed in the water. This is the main broad classification of your vitamins. And these fat soluble vitamins is your vitamin A, D, E, K, and the water soluble vitamins is your total B complex group of vitamins is your water soluble vitamins, and vitamin C is also your water soluble vitamins. And B complex groups of vitamins, it includes specifically vitamin B2, B1, B2, B3, B6, B12, B9, and other vitamin C. Vitamin C is otherwise called as the ascorbic acid. First, I will discuss about the vitamin A. Vitamin A is otherwise called as the, it is mainly vitamin A is the fat soluble vitamins, and these vitamins are present mainly, it is readily absorbed in the fat. Vitamin A is otherwise called as the retinol. That means the other names of the vitamins A is the retinol. It is mainly found in the animal origin, and specifically the animal sources of proteins like the ghee, butter, and fish, milk, butter. These all are contains liver, and the kidney part of the kidney part is also contain the richest sources of vitamin A. Liver oil and cod, sard, all these fishes are the richest sources of vitamin A. And all the plant foods that does not contains the retinol. And that plant-based foods, they are mainly contains the yellow pigmentation, yellow colored pigment that is called as the carotenoids. And that after ingestion of these plant-based vitamin A rich food, that carotenoids, it converted into the retinol. After ingestion of this type of plant-based vitamins A, it will convert it into the retinol. And the carotenoids are the pigment, and these are the precursor of the vitamin A. Precursor is the, precursor means which can be converted to the vitamin in the body. That is the plant-based foods that does not contains the retinol. After ingestion of the certain kinds of dark orange or yellow color fruits and vegetable, it is that because the presence of this type of pigment, this carotenoids, it's converted in after ingestion of this type of carotenoids, it will converted to the retinol. And also the plant-based food, it contains the beta carotene. And beta carotene is nothing. Beta carotene is mainly widely distributed in the carotenoid in the plant-based food. All the yellow color vegetables, fruits, and the orange color vegetable fruits, these are contains the carotenoids. That carotenoids is nothing. This carotenoids is the pigment. The sources of the carotenoids are your papaya, carrot, and ripe mango. Uh, Such fruits, orange vegetables like the carrot, ripe pumpkin, these all are contains the uh, beta carotene. And all the greeny leafy vegetables that contains the carotenoids. And the yellow and dark yellow and dark orange color fruits and vegetables, that is also contains the richer sources of carotenoids pigments. And due to the presence of another pigment that is called as the chlorophyll, in the all the greeny dark leafy vegetables like fenugreek leaves or the mustard leaves, spinach, cabbage, these are the richest sources of carotene.
In maximum Indians, they are not consuming enough amount of animal sources of protein. That's why they are having the devoid of vitamin A. That is the retinol. They contain beta carotene. The conversion of the beta carotene to the vitamin A or the retinol is not very efficient in the body because one half of the beta carotene absorbed is converted to the retinol. People who consume very less animal foods need to consume plant foods such as the dark greeny leafy vegetables and the orange and yellow color pigmented food. And for the if we will consume this type of fruits and vegetable, it will meet the vitamin A needs. And what is the absorption and the storage area of the vitamin A? Vitamin A is readily absorbed. Vitamin A is after ingestion, it is either in the form of the retinol, otherwise in the form of the carotene. After absorption, it will reset the intestinal cells and that retinols forms a complex with some weight containing particles. It's named as the chylomicrons. That chylomicrons and it takes to the bloodstream. After that, that carotene part is absorbed is much the same way like the retinol. And after the absorption of the carotene, it is converted into the retinol in the cells of the small intestine. After that, that retinol will be transported by the blood to the liver as a part of chylomicron. And specifically, this vitamin A is stored in the liver. And the remaining about 90% of the vitamin A will be absorbed in the liver only, and the remaining 10% will be distributed to the other organs and the different glands of the body like the lungs, kidney and the adrenal gland. The remaining 10% of the vitamin A will be deposited in the kidney, lungs and your adrenal gland. This is all about your absorption and the storage of vitamin A. What is the main function of vitamin A? Mainly, vitamin A is helpful for the maintaining of the normal vision. Vitamin A plays a very major role for the vision because the retina has the two kinds of cells. In our retina, two kinds of cells is there. One is your what? One is your rods and another one is your cones. Both the cells. That means the rods and cones are very sensitive to change in the light, but they react different and perform the different types of functions. And the rod is very sensitive towards the dim light, and cones are respond to the bright light. And the rods mainly contain a pigment. It is called as the rhodosporin. And this rhodosporin is formed by the combination of the specific form of vitamins A with the protein. And rhodosporin is that breakdown into the components when exposed to the bright light. The main function of the vitamin A is your maintaining of your normal vision. Vitamin A is highly essential. And vitamin A also play for the proper growth and supports the growth. Vitamin A is highly essential for the development of the skeletal muscles and the soft tissue, and the growth of the body is very vital. And vitamin A deficiency it causes its bone it will not increase the ossification of the bones. That means bones does not grow to their full length, and the overall growth of the body will be affected if you will not consume sufficient amount of vitamin A in your diet. And the chief function of the vitamin A is that it protects against the different type of disorder. That means vitamin A is plays a very important role for the formation of the epithelial tissue, most healthy. And some examples of epithelial tissue is your eyes, your skin,
your mucosal cavity, your gastrointestinal tract, your respiratory tract. All these are contains the soft epithelial cells and soft epithelial tissue. If we will not consume the proper amount of vitamin A, then it causes the dryness of our soft and epithelial tissue. Because of that only, you may be affected by the different types of infection. That person, those who are not having the sufficient amount of vitamin A, that they will very prone towards the repeated infection of their gastrointestinal tract, otherwise the urinary tract, otherwise the buccal cavity may be affected because of the lack of vitamin A in their diet. And also uh, and the lack of vitamin A, it causes the epithelial tissue becomes dry, cracked, and the skin will be looks like the toad skin, and also the inner wall of the GI tract and the lungs will be dry. That's why vitamin A is highly essential for our body. And if our soft and the connective tissue and the epithelial tissue will be dry, that that person may be affected by the diarrhea, respiratory infection, and ear infection. Vitamin A is highly essential for the prevention of each and every kinds of epithelial tissue disorder, and it will be prevented the each and every kind of infectious disease also. And vitamin A also helpful for that, it will increase the vitality, and it also repair the epithelial tissue cells. This is all about your vitamin A. And vitamin A is also very helpful for the those who are having the complication of the alopecia. For them, this vitamin A plays a very important role. And vitamin A is also highly essential for the bone and teeth development, and for the reproductive disorder, those who are having the any kind of reproductive function, vitamins A play a very major role, because it will increase the vitamin A will be increase your reproduction or the fertility and fetal development. And vitamin A plays a very major role for the management of any kind of dermatological disorder. For the dermatological issue, that means those who are having the complication of the any kind of dermatitis and acne, otherwise psoriasis, for them this vitamin A plays a very important role. And what are the sources of vitamin A? The sources of vitamin A is mainly we will get it from the animal sources and from the plant sources. Mainly vitamin A we will found from the what? Animal sources like the meat, cheese, egg, cream. All these are contains butter, egg. This contains the vitamin A, and the plant is also contains the vitamin A, like the all the carrot, red or yellow vegetables, fruits, carrot, pumpkin, mango, papaya, sweet potato, and apricots are the good sources of vitamin A. All the broccoli and spinach is all the broccoli, spinach, and all the dark greeny leafy vegetables. It also contains the vitamin A, and all the fortified food. Fortification after the fortification of the food, it also contains the richest sources of vitamin A. Vitamin D. And another fat soluble vitamin is your vitamin D. The second fat soluble vitamin is your vitamin D, and vitamin D is otherwise called as the sunshine vitamin.
It is otherwise called as the sunshine vitamins, and this vitamin will be manufactured from the substance present in our skin. When we will expose you to the skin or to the sunlight at that time, when the sun ray will be directly impact to our skin, it will in our skin it will synthesize the vitamin D, and that vitamin D is dietary sources of vitamin D. Some animal sources also contains the vitamin D, like all the eggs, liver, butter contains the vitamin D in significant amount, but the all the cod liver oils and richest sources of vitamin D is there, and it is used for the plant origin specifically does not contains any kind of vitamin D, and there are mainly two types of vitamins D is there. One is the cholecalciferol, and the another one is your ergocalciferol. Vitamin D2 is called as the cholecalciferol, and vitamin D2 is your ergocalciferol, and vitamin D3 is your cholecalciferol. Ergocalciferol is derived by the eradication of the plant sterols and ergosterol, and mainly this D3, D2 we will found from the mushroom. Okay, mushroom contains excess amount of ergocalciferol. Ergocalciferol is otherwise called as the vitamin D2, and vitamin D3 is your cholecalciferol. Cholecalciferol. Hmm? କି ହଁ ଦେବେନି ବଢ଼ିଆ କରିବେ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖୁନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ଆଣିବେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ପଢ଼ନ୍ତି କିଛି Vitamin D is broadly classified in two types. One is the vitamin D2, and the another one is the vitamin D3. D2 is the cholecalciferol, and vitamin D2 is your ergocalciferol. Ergocalciferol will be found from the what? Found from the mushroom, and the vitamin D3 is your cholecalciferol, and cholecalciferol will be found from the eggs, fish, liver oil, and when the ultraviolet ray will be directly interact with our skin, it will produce the vitamin D3. Vitamin D3 is otherwise called as the cholecalciferol. All of you listen one thing. পরীক্ষাতে প্রায় 2 মার্কের কোশ্চেন আসে, what is the difference between cholecalciferol and the ergocalciferol? Okay, बुझीला लेखन्तु समस्ते मो सेशन समय समस्ते कागज कलम धरिकी बसिबो, नोट्स धरिकी बसिबो, एमती खाली सुनी दिले सब जिंस मने रुहेनी. एटलिस्ट मु जो जोटा इंपोर्टेंट कहबी तमरा फॉर योर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू, इट इज वेरी इंपोर्टेंट. What is the difference between cholecalciferol and ergocalciferol? Ergocalciferol is your vitamin what? D2, and cholecalciferol is your vitamin D3. D3. What is the way the vitamin D will be absorbed, and what is the story where it is stored? Mainly vitamin D is absorbed in the small intestine. The absorption part takes place at the small intestine because bile is the essential for the effective absorption of the
vitamin D. And the maximum part of the vitamin D will be absorbed is completed in the after complete absorption at the intestine, and the vitamin D directly enters to the bloodstream, and bloodstream was the part of the chylomicron. Vitamin D is formed in the skin or exposure to the sunlight. Also enters the bloodstream also. What is the chief function of vitamin D? Mainly because of this vitamin D, it maintains the, it mainly bone healthy. It keeps our bone healthy, and it also helpful for the immune system regulation. That means it regulate and strengthen our immunity system, and it also helpful for the normal growth also. Vitamin D aids the process of mineralization of the bones, and by its increasing the absorption and the calcium phosphorus. Because of this vitamin D, it absorbs excess amounts of calcium and the phosphorus, and it also help in the deposition of the calcium and phosphorus in the bones. Okay, and minerals like the calcium, phosphorus, when deposited in the bone, makes them strong and hard. Strong and hard. Without calcium or phosphorus रे ଆମର କେବେ ମଧ୍ୟ ବୋନ୍ ର କ୍ୟାଲସିଫିକେସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। बोन रो ओसिफिकेशन पाई, बोन रो कैल्सिफिकेशन पाई, बोन रो मेचुरेशन पाई vitamin D plays a very major role, and because of this vitamin D only, it will easily absorb the calcium and the phosphorus. What is the sources of vitamin D? The main sources of vitamin D is your what? Sunlight. Sunlight. हाँ तुम जीवन की तम टाइम इगले घंटे लेट रहसी घंटे लेट रहसी हमें म्यूट कर दिए देखते भी जिनसे देखो पूरा पूरी करियर में मैं कौन छी ମୁଁ ଖାଲି ଜାଗା ଘର ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିବା ସବୁ ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପଡିଯାଉଛି ଗଲାଣି ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲାଗିଲା ଯାଇକି ପଳେଇ ଗଲି ଟେନସନ୍ ତାପରେ ଏକ୍ସାମ୍ ତାପରେ ତ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତମର କିଡ଼ା ତମ କିଡ଼ା ସବୁ This is all about your vitamin D. Now I will discuss about the vitamin E. Vitamin E is also the one type of pure fat-soluble vitamins. And vitamin E is otherwise called as the tocopherol. Vitamin E is otherwise called as the tocopherol. And there are only two types of vitamin E. One is the tocopherol, and another one is your tocotrienol. Tocopherol, tocotrienol. This is the two types of vitamin E. And tocopherol is the alpha tocopherol, beta tocopherol, gamma tocopherol, and delta tocopherol. There are four types of tocopherol. One is the alpha tocopherol, beta tocopherol, gamma tocopherol, and the delta tocopherol. Another one is your tocotrienol. Tocotrienol means tocotrienol is the alpha tocopherol. It is also alpha tocopherol, beta tocopherol, gamma tocopherol, and delta tocopherol. All the oils, it contains the vitamin E, like the soya oil, cottonseed oil, safflower oil, sunflower oils. These all are the vitamin E sources. And other food sources are all the grains and the cereals, dark greeny leafy vegetables, oil seeds, nuts, pulses, vegetables. It also contains the vitamin A. And food of the animal origin also contain very low in the vitamin E, like egg yolk, butter, and liver contain some amount of vitamin E. Egg yolk, butter, and liver contain some amount of vitamin E. And where is the vitamin E absorbed? Mainly vitamin E is the absorption. It's a fat-soluble vitamin, and absorption of the vitamin E also requires the presence of fat and bile.
and the absorption from mainly takes place in the upper part of the small intestine. It absorbs the vitamin E. Vitamin E, chylomicrons, is carried to the liver through the bloodstream, and it will distribute it to the different body parts. All the body tissue have the small amounts of these vitamins. And what is the chief function of vitamin E? Mainly the vitamin E is helpful for the, it gives to a structure like the unsaturated fatty acids. Vitamin A, vitamin C mainly prevents their destruction in the body as well in the food. Vitamin E is mainly responsible for the reproduction. Reproduction and vitamin E deficiency, it may causes the sterility. ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ର କମି ରହିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ହେଲେ ମେଲ୍ ଷ୍ଟେରିଲିଟି ଦେଖାଯିବ, ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ infertility ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। and it also causes the vitamin E ଯଦି ଶରୀରରେ କମି ରହୁଛି, it causes the dystrophy, muscular dystrophy. Now I will discuss about the vitamin K. Vitamin K is nothing. Vitamin K is the plant kingdom's plant foods, that all the dark greeny leafy vegetables, it contains the vitamin K, and vitamin K is mainly helpful for the synthesis of prothrombin. Synthesis of prothrombin, and that prothrombin is helpful for the clotting of the blood. जदि आमे डाइट रे विटामिन के ज़्यादा सफिशिएंट न नेइथिबा ताले सी हमर ब्लड को ठीक से क्लॉट करि परिबो नाही। ब्लड क्लॉटिंग पाई हमर प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, ब्लड रे गोटे प्रोटीन्स रहिछि प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर्स दरकार, एंड विटामिन के कौन करे प्रोथ्रोम्बिन synthesis of the prothrombin, and that prothrombin helpful for the clotting of the blood. And mainly all the greeny leafy vegetables like spinach, cabbage, lechu, it contains the richest sources of vitamin K. And all the animal foods like the milk, egg, yolk, meats and fish, these contains the vitamin K. Vitamin K mainly manufactured by certain and approximately half of the vitamin K needed by us manufactured in the intestinal tract, and other half is obtained from the plant food or the animal food. And where is the vitamin K absorption takes place? Mainly absorption of vitamin K requires bile, and mainly upper part of the small intestine where the vitamin K is absorbed. Vitamin K is stored in very small amount in the body, and its concentration is not high in any particulars. Okay, and what is the function of vitamin K? The chief function of vitamin K is it is the anti-bleeding vitamins. Means जदि हमारो विटामिन के शरीर रे नथिबो, हाथ किंबा गोड़ कि कोर्स जगह किछि इंजुरी हे गला ताले हमर ब्लड टा क्लॉट हबो नाही। सेहिति पई आमे हमर डाइट रे निहाती रूपे डेली बेसिस रे विटामिन के रिच फूड खाइबा, so that it will help in the formation of a protein which is called as the prothrombin, which is strong and essential for the blood clotting. This protein is mainly helpful for the blood clotting. ए डी ई के विटामिन्स बुझेला मुझे पढ़ेले। यस मैम बुझिएला। बुझेला
जाओ मैम एटलिस्ट जड़े तो रेस्पॉन्ड कले बहुत खुशी लगेला नाटा कौन कहलो टिके तुम्हारा विंध्यावासिनी विंध्यावासिनी परिजा आउ समस्ते कौन बुझिला ना बुझिलानी ना किछि नहीं न्यूट्रल मु किछि पचारुछि सुना जाउछि ना मो कथा सस्मिता सस्मिता बेहेरा प्रियदर्शिनी कर आज्ञा मैम बुझिएला विटामिन ए डी ई के हाँ मैम टिके बुझे ना फर्स्ट क्लास टिके ये होचे हो जेतिकी भी सुनुछ आ गोटे थर पढ़िले तो किछि बुझी हबो ना आज्ञा मन दी के सुनंतु एठू अधा सुनिला परे तापरे हमें गोटे गोटे थर दुई दुई थर टिके पढ़िबा पढ़िला परे निहाती बुझी हबो फिर भी जदि काहार किछि डाउट रोछि मते फोन बाटे आपण पचारि परिबे मु आपनको गाइड कर आज्ञा मैम बुझी पाली असाइनमेंट टा ओके केमती मिलिबो हमें तो जानी पारुनु नेट रे तो देखोन 2025-26 रा असाइनमेंट आसीबो ना कौन कहले मैम असाइनमेंट टा हाँ एको किया है नि बोधे केबे असाइनमेंट ये करे हबो हाँ नहीं असाइनमेंट क्वेश्चन गुडा को कहीं के तो 25-26 तम हाँ तमे केबे एडमिशन नेथिला ए 2025 जनवरी रे हाँ 25-26 रो असाइनमेंट रो क्वेश्चन रा लिखिबो है हाँ तो सेटा आसुनी तो साइट रे वेबसाइट रे आरसी भुवनेश्वर आसुनी कि मेन रे भी मारले igno.ac.in रे भी मारले तो आसुनी तमरे 25-26 रे जो डीएनएच रो हाँ सुनो जो रीजनल सेंटर रो जो नंबर देथिबे ना जो फोन नंबर देचंती कांटेक्ट नंबर देचंती से नंबर रे गोटे थरा कॉल करके पचार जी भी रजिस्ट्रेशन काउंटर रे जे केही भी जणे बसिथिबे हमें एई वर्ष एडमिशन नेइछो एंड हमको असाइनमेंट क्वेश्चन केबल हमें देबो आउ जदि हमें 2025 टू 26 देबो आबे पर्यंत हमें को वेबसाइट रे क्वेश्चनरी पाइबो कोड पाइबो क्वेश्चनरी बुझियला आज्ञा मैम से नंबर टा कोठू पाइबी से फोन नंबर हमरे नाही कि हमर वेबसाइट रे देखिले तो रीजनल सेंटर भुवनेश्वर आसी जीवो ना रीजनल 2100 रीजनल सेंटर रो जो कोड रहिछि रीजनल सेंटर रो टेलीफोन नंबर देखो तमे वेबसाइट रे देखो मिल जीवो कोठी तमे कोठी का पिला तमे कटक रो भुवनेश्वर के आसी ना रीजनल सेंटर के आसी ना ना मैम जाइनी जाइनो ना ऑनलाइन रे खाली ये कर दीछो आज्ञा वेबसाइट रे देखो नंबर देखि फोन करो हला नले मु नेक्स्ट क्लास रे आज्ञा नंबर नले मते पछेरिबो मु करे कहि देबे ना आज्ञा 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 ओके थैंक यू सो listen मच मैम हाँ vitamin K mainly we will found the vitamin K from the all the dark green leafy vegetables it contains the vitamin K and especially the cabbage, spinach, carrot, potatoes, soyabeans, cauliflower and wheat bran these all are contains the vitamin K okay बुझियला ना नहीं बुझियला ना नहीं am I audible to everyone सुना जाउची मु कोन कहूची सस्मिता बेहेरा प्रियदर्शिनी कर मु कोन कहली बुझी पारलो हाँ सुनती समस्ते टिके वीडियो ऑन करिबा हमें वेरी गुड विंध्यावासिनी
सस्मिता विटामिन के बुझी पारिल म्यूट कर देइछो बोधे किछि ऑडिबल होउनी हां आत्रे को गोटे मिनिट हाँ बुझी पारुछ ना बुझी पारुन बुझी पारुछु गुड वेरी गुड ओके विटामिन के आमे को कोथु पाइबा all the dark greeny leafy vegetables cabbage cauliflower then sweet potato soya beans all these things contains the vitamin K and because of this vitamin K deficiency बहुत प्रकार रोग हुए जोटा कि वेरी कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द विटामिन के डेफिसिटी इज योर सीलियाक डिजीज सीलियाक डिजीज होची गोटे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज खाद्य नली रे हुए सेटा हुए जदि हमर विटामिन के रो अभाव रहिछि किंबा इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम इज another type of disease it is also occur because of the lack of vitamin K and cystic fibrosis means cyst formation hobo जो छोटे छोटे cyst हे जिवो that is also occur because of the what lack of vitamin K तो vitamin K आमे आखि बुझी की कहिबा सब तक डार्क ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स टू आमे vitamin K पाइबा and that vitamin K is highly essential for our body because ये हमर prothrombin synthesis करे prothrombin is nothing prothrombin is the one type of protein because of that protein आम ब्लड रे जो क्लॉट फॉर्मेशन हो जति माने कर हमर गोडर गोटे खंडिया हे जानता किबा हाथ गोटे खंडिया हे जानता जदि हमर विटामिन के आम शरीर रे सफिशिएंट नथिबो ताले आ ब्लीडिंग ता बंद हबो नाही माने क्लॉट हबोनी ब्लड ओनली ब्लड लॉस हे चली थिबो तो इट्स वेरी इंपोर्टेंट टू कंज्यूम सफिशिएंट amount of vitamin A in our regular diet बुझी होची बुझिला ना नहीं पढ़िले क्वेश्चन लिखि परिबो हां very good now I will discuss about the vitamin C rich food समस्ते वीडियो ऑन आमे जेजण करि परिबा वीडियो ऑन करो वीडियो ऑन करिबा और वीडियो ऑफ करिया भितर बहुत वास्ट डिफरेंस बिकॉज़ जिते बळे आमे वीडियो ऑन करूछंती माने गोटे आई कांटेक्ट रहइबो एंड तमरो पाठ सुनिबा को आग्रह हबो एंड जहाँ भी सुनिबो अटेंटिवली तम ब्रेन रे पूरा फीड अप हेकि रहि छिबो बुझियला आ आमे तो वीडियो ऑफ कर दी थानते हम कंसंट्रेशन रे टिके डाइवर्ट हे जाव आ एटा जेहेतु एते बड़ बुक एंड इट्स वेरी वाइटल सब्जेक्ट फॉर कंप्लीट दिस योर डीएनएच एंड एटा डे टू डे लाइफ रे तम पई निहाती दरकार काली सकाळे जाई कि जति कोनसी हॉस्पिटल रे जे डाइटिशियन जॉइन करिवो किमा न्यूट्रिशनिस्ट जॉइन करिवो ए बेसिक जिंस जदि हमें जानि नथिबा ताहाले कोठी भी हमें काम करिवा पई योग्य नहीं ठीक ना नहीं एटा अति माने सिंपल जिंस आ भितर तो बहुत जिंस अछि बट हमें ए छोटो मोटो जिंस को जानिले ही हमें आगो को बढ़ी परिबा एम आई राइट और रॉन्ग हां बस तो सेति हमें ट्राई करबा जदि आपनकर किछि प्रॉब्लम नाही तो वीडियो को ऑन करतो एंड पाठ सुनिया पई चेष्टा करो now I will discuss about the water soluble vitamins water soluble vitamins water soluble vitamins mainly water soluble vitamins is two types one is your B complex group of vitamins and another is your vitamin C गोटे और vitamin B complex group of vitamins होची हमर कोन
water soluble vitamins because एगुड़ाक water readily soluble है परिबे द्रवीभूत है परिबे that's why its name is the water soluble vitamins. And B complex group of vitamins is different types of B complex group of vitamins like vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B9, vitamin B12. Hello. 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 Oh, hello. किए कहूँ हाँ हाँ नेप्रो एचपी टा मगे दिंतु नेप्रो एचपी रो तो सेमती आउ किछि नाही तार नेप्रो एचपी नले मगे दिंतु गोटे मिनिट नले मो आरोटा बोते पेशेंट डायलिसिस होछि के होछि ना सेलेविडा डायलिसिस सेलेविडा डायलिसिस अछि ना डीएलएस सेलेविडा डीएलएस दियंतु नले रिसोर्स डायलिसिस कोटे आसे सेटा दे दियंतु हला हाँ दियंतु रिसोर्स डायलिसिस दियंतु जोटा भी रिसोर्स डायलिसिस दियंतु नले सेलेविडा डीएलएस दियंतु there are different types Ma'am? of हाँ कुह मैम से जो आरसी भुवनेश्वर रे जदि हमें मारुचु सेटा डीएनएच माने असाइनमेंट डीएनएच जो मारुचु सेटा 24 25 रा आछि क्वेश्चन ता माने हमर कोन जोरा हम जनवरी रे एई वर्ष जनवरी रे जॉइन करचु सेटा कोन 24 25 रा असाइनमेंट करिवु की हाँ हेई परिबो किंतु आउ टिके क्लैरिफाई हे जिवो मु काले टिके कथा हे जे कि मु आपण मानन को कहि देबी हला आगे टाइम नै ना केमती को पेपर रे लिखिबु कोन करिवु किछि बुझा पडुनी एक्चुअली मु आरसी भुवनेश्वर जाईनी जमा अच्छा 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 ठीक अछि समस्त टिके लाइन रे रहंतु मु देखै दोछि बाबत रे टिके आईडिया पाइ जिवे हला मु कहि दोछि प्रैक्टिकली मु कहि दोछि टिके गोटे मिनिट खाली आ गोटे जिंस मु एक्चुअली 1 तारिख रु 4 तारिख पर्यंत मु क्लास मु रहिबेनी बुझिला ना मोर कॉन्फ्रेंस अछि मो बाहर को पळेबे एंड जदि हबो हमें मो आउ जो फैकल्टी थे से माने तांको क्लास नहीं जाइए एंड मो रिटर्न हला पर मो जिनस कवरेज कर देबी हला ओके मैम ओके
एटा हूँ गोटे असाइनमेंट कॉपी देखो एथिरे प्रथमे आपणकर एमती गोटे इग्नोर गोटे लोगो रहिबो तापरे आपणका नेम एड्रेस प्रोग्राम जो फॉर्मेट रे आपणकर आसे देखिथिबे वेबसाइट माध्यम गोटे फॉर्मेट आसीबो जोटा कि असाइनमेंट सबमिशन रो गोटे तो सही फॉर्मेट रे आपण नले मोटा लिखिके आपनको जदि हम मो ये कर देबी सेव कर देबी देखंतु एठी इग्नो गोटे लोगो रहिबो तापरे आपण एनरोलमेंट नंबर नेम एड्रेस प्रोग्राम कोड कोर्स टाइटल तापरे रीजनल सेंटर आपनको ना जो रीजनल सेंटर जो स्टडी सेंटर असाइनमेंट नंबर फोन नंबर मेल आईडी एटा होची फ्रंट पेज सेकंड पेज रे हमें निजरो कोन एटा होची तमरो आईडी कार्ड इग्नो आई कार्ड रो गोटे जेरॉक्स रहिबो तापर तुम जो असाइनमेंट सबमिट कर माने डीएनएच 1 सबमिट कर तो डीएनएच 1 रो क्वेश्चन जेतक ए वर्ष रो क्वेश्चन बुझियला तापर होची तमरो एटा होची आंसर हैला आंसर लिखिला बेले सब बेले जेति की मार्किंग जेते मार्क रे तुम क्वेश्चन अटेंड करछो सेति की मार्क बड़े ही आंसर लिखिबो अननेसेसरी बेसी लंबा लेंदी करी के लिखिबार कुछ कारण नाही बुझियला तापर सेकंड जिंस हला सब बेले क्वेश्चन नंबर भलो से मेंशन करबो कारण तमे तेरो 1 टू 10 टा क्वेश्चन अछि पुनी सेक्शन बी रे मने कर 5 टा क्वेश्चन अछि तो तमे के जण कोन करंती केते जण तो पूरा सीरियली लिखि दियंती बट आउ कितरा खाता रे हमें देखि थाउ सीरियली से माने न लिखंती जदि से माने को न आसुची कि कोन होची गोटे अधिक माने बोल आसुची से आगे लिखि दिला कोटे आंसर पाइनी से परे लिखिला तो आपण जहां भी लिखंतु से साइड रे आपनकर येटा भलो से करंतु कोन क्वेश्चन नंबर बुझिला जदि ग्रुप ए रो 9 नंबर करचंदी कि 10 नंबर करचंदी कि तापर 5 करचंदी कि 1 करचंदी या कि अपन को क्वेश्चन ता पूर्व थिबो तापर हमें अपन को आंसर शीट को देखि कि से आंसर हमें इवैल्यूएशन पाई सेटा सुविधा हो गोटे कथा हला गोटे खाता जिते बेले गोटे एग्जामिनर देखुचंती तम खाता से प्रेजेंटेबल हबा दरकार आमे से क्वेश्चन आमे देखिला बेले खिचड़ी भलिया लिखि देतो 2 रो ए लिखिथिबो तापर 3 रो सी लिखिथिबो देखिला को लेफ्ट साइड रे सेठी क्वेश्चन रो नंबर रो किछि नंबरिंग नथियो तार किछि माने अछि आमे सेइत्रो खोजी खोजी की बाहर करबो तो सेटा ठीक न सब बेले यू हैव टू मेंशन द क्वेश्चन नंबर बुझिला प्रॉपर्ली यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर एंड एपort सेपटे करिकी माने माने करो ए 5 नंबर लिखि देले तापर 4 नंबर लिखले तापर 2 नंबर लिखले जहां भी लिखतो बट यू हैव टू प्रॉपर्ली राइट डाउन द question number in the left corner okay and in the assignment point of view now you have don't left a single question छाड़िबे नहीं सब तक ट्राई करबे 100 मार्क्स तो 50 मार्क्स तो जेते मार्क्स होना काहे कि सब तक कंप्लीटली आपण अटेंड करिया सब लिखिकी देबे जो आंसर आपण पाइबे जो आंसर आपण बुझिबे पचारिबे न होले हेल्प नेबे किंतु सब आंसर जदि हम 100 मार्क्स लिखिबा सेतु हमें 90 की 80 की हमें जिते की पाइबा जदि हम आधा लिखिबा न लिखे आपण मार्क के देबो असाइनमेंट मार्क तो आपनकर बहुत हेल्पफुल करिवो ना थ्योरी मार्क्स से मिसला बुझिएला आ कुछ कार बुझिबार अछि मैडम आपण म्यूट अछन तो अनम्यूट करंतु मैम आमे से जो फॉर्मेट जोड़े देले लोगो हरिका लागी ची इग्नोर से फॉर्मेट से फर्स्ट पेज टा हम कोन डाउनलोड करबो कोठू कोन कहली एंती खाता मिलु छी कोन कहली ना ना खाता मैडम आपण व्हाइट पेपर ए जक किछि खाता मिलिबोनी एगुडा को आपण देखंतु निजे मैडम व्हाइट पेपर रे लिखिबे बुझ परले आपण कोठी रुहंतु आपण कोठी रुहंतु निश्चय कटक कटक रे कटक कटक आज्ञा आउ से जियो सस्मिता अनम्यूट करो सुना जाउनी आवाज सुनी म्यूट रे अच्छो बोधे देखो तमे
नारी सुना जाऊनी कुछ ठीक अच्छे आमे मैडम आपण एमती प्लेन व्हाइट पेपर रे करिवे फ्रंट पेज टा खाली आपण एमती गोटे लोगो लागि कि गोटे तापर एतिकी जिनस मेंशन हे कि रहिबो एटा आसी जिवो आपण को वेबसाइट रे देखिले मिलि जिवो तापर आपण को आईडी कार्ड तापर आपण को क्वेश्चन जो क्वेश्चन रो आपण हे करबे तापर आपण एनी व्हाइट पेपर रे लेखि लेखि चलिबे तापर आपण ताकू स्टैपलिंग कर देबे नले गोटे जो आमे गोटे स्पाइरल एमती स्टैपलिंग कर देबे कि चल किछ असुविधा स्टैपलिंग कले कोन हुए यदि बेंचर पेपर थिबो ना एगुड़ा को कोन हुए छाड़ी जाए बुझले माने बाहर जाए आउ कितना खाता रे एमती जेमती गोटे गोटे कोन देई देथिबो जेमती आपण खातार पेपर मिस न हो सेट हला क्लियर आउ जा आपण को रहिबो मु तो नंबर अछि मु नंबर ऑलरेडी देई देछि नंबर रखि छन समस्ते ना मैम मो नंबर नहीं मो पाखरे नहीं 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 मैम नहीं 5 3 4 दिन क्लास कलेनी अपन नंबर रखि नांती हां और रखो नहीं, मो मैम। नंबर रखि कॉल करिवे थाउ ताले नहीं नहीं मैम दियंती नंबर टा देवी नंबर टा ठीक अछि लेखो तो हां 700 700 80 80 210 210 48 48 अब एटा होछि मोर कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप नंबर होछि 94 तमे जदि प्रोजेक्ट बनेबो जहां बनेबो तार सिनॉप्सिस बने प्रोजेक्ट बनेबो ए नंबर रे मते पठा पठे करे मु ताको वेरीफाई करी कि तुम गाइड करी हैला 94 94 3932 39 32 3932 77 77 53 53 हैला 53 हां लास्ट वन इज 3 yes yes ma'am मैडम 83 के 53 हां 83 के 5 943932 7753 हैला आगु को अपन माने जहां भी किबा की कोटा न बुझी पारुचते असाइनमेंट लिखिबार हो किबा प्रोजेक्ट तो अपन प्रोजेक्ट भी रही प्रोजेक्ट रो भी मार्क्स अछि प्रोजेक्ट भी अपन फेल ले भी फेल ही छिबे एंड ताको दिल्ली जीवो अपन को इवैल्यूएशन पाई बोली प्रोजेक्ट हमें जने गाइड हमें अपन को अप्रूवल कला बोली अपन प्रोजेक्ट करबे तो प्रोजेक्ट जहां भी बनेबे मते मैम प्रोजेक्ट रो हेडिंग गोटे देई दियंतु 3-4 टा हमें ताको बाछि की कर दबो नहीं प्रोजेक्ट माइंड बेटर होबो प्रोजेक्ट पाई बेटर होबो अपन प्रथमे निजे निजर को सब्जेक्ट रे अपन माने को रिलेटेड अपन करिया पे चाहूचंते सेही टॉपिक अपन चूज करन तो प्रथम जिंस हला रोगो रोगो डिजीज को नेकी करिवे ना आउ किछि को नेकी करिवे बुझेला जेमती विटामिन सी रे हम शरीर पे कोन काम करे रोल ऑफ विटामिन सी फॉर द ह्यूमन हेल्थ करिया पे के चाहिए नाइ जदि आजिकली बहुत प्रकार रोग एक खाद्य ही कारण मुख्य कारण ना नहीं तो से रोग डिजीज स्पेसिफिक जदि करेंगे ताले डिजीज स्पेसिफिक रे आपण जेकोसी डिजीज चूज करंतु जेमति प्रेगनेंसी समय न्यूट्रिशन कोन आमे देबा किबा जो माने रक्तहीनता तांको पई आमे न्यूट्रिशन कोन देबा डायबिटीज लोकंकर कोन आमे देबा न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू रो किबा जदि जनकर आउ किछि ओबेसिटी रहिछि किबा हार्ट पेशेंट माने को आमे कोन देबा आजिकल गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन हो गलानी गैस्ट्रिक एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन ए मानक पाई मधु न्यूट्रिशन हमें कौन देबा तो आपण माने पर्सनली आपण चूज करंतो बुझिला कम्युनिटी बेस ले कौन होबो कम्युनिटी बेस रे आपण कम्युनिटी आगे सर आगे सर हाँ सर सर
राजा 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 सुनो रविंद्र सर फोन करते राजा केतेटा काली डाइट दिया देखो जल्दी देखो काली केतेटा दिया आज केतेटा दिया देखी कहला हाँ काली केतेटा टोटल डाइट दिया लंच से केते थिला डिनर केते थिला एंड आज केते अछि देखी जल्दी चेन्नई मीटिंग अच्छी चेन्नई मीटिंग में कॉल आसी फोटो लिखी दे लिखिकी जल्दी हाँ डाइट होटल कितना मिस कर खाली कितना आज कितना जल्दी हाँ कौन कहते कि कौन पचारते कौन तो मैम कम्युनिटी कहते कम्युनिटी ऊपर कौन गोटे प्रोजेक्ट रे हाँ कम्युनिटी ऊपर कले कौन हम आपण कम्युनिटी को जाई कि गोटे मानेकर अंगनवाड़ी रे पिला मानेकर हेल्थ केमती इम्प्रूवमेंट होची कि जदि नेकी करिवे बुझिपाले तो आपन को रेगुलर बेसिस रे अंगनवाड़ी जीवा को पड़िबो डाटा कलेक्शन करिया को पड़िबो बुझिपाले ना नै ए सब जिंस गुडा को टिके कम्युनिटी लेवल रे काम करिबा जाय कि प्रैक्टिकली जाय कि ए करिबा त टिके डिफिकल्ट हाँ डाटा कलेक्शन करिबा हेलो हाँ सर काली डिनर होची टोटल सर डिनर होची 589 सर हाँ सर सर लिक्विड एटीपीड होची सर 76 डिनर रे सर आज होची डाइट होची 612 सर टोटल पेशेंट होची सर 686 आउट ऑफ दैट डाइट होची 612 सर सर रात्रि रे होची 6 सर 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 रात्रि रो डिनर होची टोटल पेशेंट 665 थिले सेमानक भितर डिनर टोटली अमाउंट जाइट सर 589 आ लिक्विड डाइट तो सर मोरली ऑलरेडी काफी मिसी की सर टोटल होची डिनर जाइछि 589 आ एटीट्यूड जाइछि 76 सर एटा होची काली का डेट 29 रे सर हाँ हेलो कम्युनिटी बेस्ड कले टिके डिफिकल्ट हबो
आपण माने जदि डिजीज स्पेसिफिक करिवे ताहले एटा भी बहुत भलो हबो आपण बुझी पाले ना आपण जोटा कॉमनली इवन डायरिया पाई मध्ये डाइट बने पारिबे फीवर पाई मध्ये न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट डाइट फीवर रे हमें केमती न्यूट्रिशन किंतु आपण माने जते बळे भी हमें प्रोजेक्ट करूचंती सब बळे हमें कोन करिबा जोटा कि माने बेसी रेगुलर बेसिस रे जोटा बेसी आपण को पई काम रे आसीबो से बळे डाइट हमें करिबा हैला जेमती देखंतु डायबिटीज आजिका डेट रे मैक्सिमम पेशेंट दे आर हैविंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटिक ओबेसिटी पीसीओडी जे माने अछंती जे माने कर सबले इरेगुलर पीरियड्स होची मोर पिंपल्स होची दिस आर द पीसीओडी हो कि ट्यूबरकुलोसिस जो माने टीबी हे जाउची तांकर हम न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट केमिति करिबा अदरवाइज जो माने का रेनल कैल्कुली आजकल वेरी कॉमन किडनी के स्टोन बनिबा तो किडनी पेशेंट मानक पई डाइट कोन डाइट हबा दरकार किडनी रे हम केते प्रोटीन देबा केते कार्बोहाइड्रेट देबा कोन कोन जिंस को हम खाद्य रे अवॉइड करिबा किडनी डिजीज रे तो ए भलिया डिजीज स्पेसिफिक कले भी बेटर हो सेटा आपन को डिपेंड करे कि डिजीज स्पेसिफिक रे कोन मैम गोटे डिजीज नै की करिबा की कोन कहले मैडम आउत्री कोन तो डिजीज स्पेसिफिक रे हम कोन गोटे डिजीज को नै की करिबा की हां सब बळे गोटे डिजीज को नै की करिबा गोटे डिजीज पे आपण पर थरोली सेति पे लिखिबे आ कोन केमती करिवे कोन नै जे जोटा आपण माने प्रथमे टॉपिक चूज करंतो तापरे केबे जदि भी समय होउची भुवनेश्वर जिबे आसुचंती मोस्त गुटर ता बिफोर टाइम मते कॉल करंतो केबे गोटा आसी जानतो आसी गले मु टिके आपण को गाइडलाइंस कहि देबे केमती कोन बनेबरा कोन करिबारा मु आपण को बुझाई देबे किबा किछि फॉर्मेट भी थिबो मु आपण को देखिए देबे ये करे देबे तापरे आपण को प्रोजेक्ट वर्क रे प्रोसीड करिबे बुझिए ना ने कोन डाउट हो नहीं किछि व्यस्त होंतनी आपण गोटे काम करंतु फास्ट होची पढंतु जेति की आमे फैकल्टी माने जहां भी पढौचो एंड पढेबा समय रे हमें जहां भी आपण को इंपोर्टेंट होचो सेति को फास्ट लिखम माने लिखि दियंतो ता परे आपण ताको पढंतु एंड असाइनमेंट तको जहां लिखिबे ना असाइनमेंट एमती थाए असाइनमेंट ता भी भलो से आपण पढ देले सेही थ्रू ही क्वेश्चन आसीबो आपण को सेही थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चन केबे आसीबोनी ताको बुले बंके की आसीबो बुझले सब को क्वेश्चनरी करि दियंतो प्रोजेक्ट ता भलो से बनांतो मैम मैं एबे देखुथिली आरसी भुवनेश्वर जो लिंक ये मारी के देखुथिली असाइनमेंट रे से जो 24 25 रो असाइनमेंट देचंदी सेत्री पुनी मेंशन करछि फॉर जनवरी 2024 फॉर जून 2024 बैचेस पाए तो हमर ते जनवरी 2025 बैच रे हमें जॉइन करी मु जॉइन करी छी तले 25 26 रे बाहर ले जाय के करबे पर्यंत बाहर नि दले 24 25 रो भी आपण करि पारिबे मु सेटा नहले आपण एई तो जेना सर अछंती हमर कोर्स कोऑर्डिनेटर बुझले प्रभात रंजन जेना अछंती कोर्स कोऑर्डिनेटर किमा ऑफिस फोन नंबर अछि किमा नहले मैडम मु काली क्लास रे बुझी देथि ऑफिस से तो कथा हिची आपण मानन को क्लास रे मते पचारि देबे नहले मु तो नंबर आपण मानन को नंबर दे देछि 24 आवर्स रु राती 10टा परे टू सकाळ पर्यंत मते डिस्टर्ब करिवनी आफ्टर दैट मु सब बेले अछि आपण मानन को पाखरे हैला थैंक यू मैम थैंक यू सो मच वेलकम एबे पाठवाडे जिबा हमें हेलो यस मैम पाठवाडे जिबा हां हां ठीक अछि एबे मु पढ़े भी वाटर soluble vitamins is two types. One is the B complex group of vitamins and another one is your vitamin C group of vitamins. And in the B complex group रे इतने complex means एटा बहुत सारा vitamins मिसी की B complex group तैयारी हेची जेमति कि हमर vitamin thiamine, riboflavin, folic acid, vitamin B12, niacin. So combined they form the what? B complex group of vitamin. And vitamin B act as a coenzyme and help in the metabolism of the carbohydrate, protein and fat. Vitamin B complex रो जितने प्रकार vitamins अच्छी like thiamine हो, riboflavin हो, folic acid हो, niacin हो, vitamin B12 हो, ये सब तक vitamins mainly यूज हुए हमारे coenzyme and मेटाबॉलिज्म करिया पे प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट फैट रो मेटाबॉलिज्म पे इसका हेल्पफुल करे
Coenzyme. What is coenzyme? Coenzyme is the what is substance which are needed by the enzymes to do their job effectively. Okay, that is called as the coenzyme. First, I will discuss about the vitamin A. Sorry, vitamin B1. B1 vitamin is otherwise called as the thiamine. ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ସ ର ଅଦର ନେମ୍ସ जो ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ମନେ ରଖ ବିକଜ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିଯାଏ 1 ମାର୍କର 5ଟା ନହେଲେ 2 ମାର୍କସର 5ଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ 10 ମାର୍କ ପାଇଯିବ and say 10 marks 8 empty the other name of vitamin B1. What is the other name of vitamin B1? Another is fill in the blanks. Write down the name of other name of vitamin B1. The thiamine or the B1 is widely distributed in the plant and the animal kingdom and all the foodstuff except the oils, sugar and fats contain small amount of thiamine. कौनसी प्रकार मन रख कौनसी प्रकार तेल हो चीनी हो कि फैट हो ये थायामिन न थाए ताको छाड़िले आउ जेते प्रकार आमर फूड स्टफ available it contains the what B1 vitamins mainly the plant food whole grain cereals like atta ho किमा चावल हो किमा किछि डाली हो तार सबु चोपार आउटर कवरिंग रे थायामिन थाए बुझिएला बुझी परछनी ना नहीं एंड एनिमल सोर्स एनिमल सोर्सेस रे स्पेसिफिकली हमें जदि एग यक हो किबा मीट हो किबा पोल्ट्री मांस हो there also contains a good sources of thiamine a good sources of vitamin A vitamin B1 and specifically that cereal and pulses the significantly altered the thiamine content and हमें थायामिन आमर बहुत सारा लॉस हो जाए जिते बड़े हमें फूड को कंज्यूम करते ना जमी प्रिपरेशन करने पूर्व फूड प्री प्रिपरेशन थाए प्री प्रिपरेशन कुकिंग मेथड जमती कि आम चाउल को बहुत जन ए देखी चाउल को बहुत समय 2 घंटा 4 घंटा आम पानी रे भिजई दियंती एंड तापर से पानी टाको फोपाड़ी दियंती आउरी धुअंती एंड तापर आम कौन करती रोसई करती तो से जो सीरियल्स जो ब्रांड्स थाए ना जो चोपा थाए जो चोकोड़ा थाए कि डाली जो चोपा थाए डाली की मत बहुत लोग एमती पानी रे भिजई दियंती तापर से पानी को डिस्कार्ड करती तापर ताको धोई रोसई करती एते समय जिते बड़े आमे पानी रे ताको भिजई दियंती थायामिन पार्ट जो थाए ना तार स्किन रे तो से गुड़ाक सब ऑलरेडी कौन हुए धोई हो जाए जो कि आमको थायामिन रो डेफिसिट देखा जाए शरीर रे जेहेतु थायामिन बा विटामिन B1 इज योर वन टाइप ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमें जित वाटर व्हेन वी विल सोक इन द वाटर फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ना it will loses its vitamins level and thiamine level ठीक है Vitamin B and vitamin C is the water soluble vitamin. Is it, ma'am? हाँ कौन कहले Ma'am, ମୁଁ କହିଲି vitamin C and vitamin B is the water soluble vitamin. विशेष सर टिके बड़ पाठे कहतो सुना जाउनी बड़ पाठे कहतो Ma'am, ମୁଁ କହିଲି vitamin C and vitamin B water soluble vitamin. water soluble vitamins Vitamin C and vitamin B is the water soluble vitamin. ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ କହୁଥିଲି ma'am. हाँ water Audible soluble problem. vitamins Ma'am, vitamin C ହେଉଛି water soluble vitamin and vitamin B is the water soluble vitamin. हाँ vitamin It C was and B complex group of vitamins are comes under the water soluble vitamins बुझेला जमती B1 हो B2 हो B6 हो B12 हो ये सब होची water soluble vitamins and vitamin C is also water soluble vitamins सेतरे हमें जितळ जेहेतु हमें आगु जानिले जे biotin भी जाଉଛି include होଉଛି biotin.
ଶୁଣା ଯାଉନି ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାର୍ ବହୁତ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବାୟୋଟିନ୍ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଯାଉଛି କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ଭଏସ୍ ଅଡିବୁଲ୍ ରହୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୟାଲୋ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଜଏନ୍ କରିଛି କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ କହିଲେ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ ଅଛି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିହେବନି ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ବିଲକୁଲ କ୍ଲିଅର ହଉନି ମ୍ୟାମ୍ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଛି କ'ଣ କହିଲେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆସିଛି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍କୁ ମାର୍କେଟ ଆସିଛି ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଓକେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ସେୟା ହିଁ କହୁଥିଲି ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ଭିଟାମିନ୍ ବି ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଟିନ୍ ଅଲସୋ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଦେୟାର Your voice is not audible at all. Listen one thing. ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏଇଥର ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ ଅଦରୱାଇଜ କ୍ଲାସ୍ ସରୁ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ମୋତେ 6:30 ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଆପଣ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି 9ଟା 10ଟା ଭିତରେ ପଚାରି ପାରିବେ ହେଲା Sure, ma'am. Sure. ଓକେ ହଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଫ୍ ଦ ୱିଟ୍ ଆମେ ୱିଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରୋସେସିଂ କରନ୍ତି ୱିଟ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ୱିଟ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମର ସୁଜି ତିଆରି ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ମଇଦା ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟା ବି ଆସେ ତ ଏସବୁ କରିବା ଫଳରେ ଆମର ତାର ଉପର କଭରିଂଟା ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ପୁରା ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଥାୟାମିନ୍ର ଡେଫିସିଟ୍ ଦେଖାଯାଏ ରାଇସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ଧୋଇନ୍ତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତି ତାକୁ ଘଷି ଘଷିକି ଚୋପା ଛଡ଼ାନ୍ତି ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ରାଇସ୍ ଅଲସୋ ଲସେସ୍ ଇଜ୍ ଥାୟାମିନ୍ ଲେଭେଲ୍ sprouting and fermentation processing of the rice processing the rice is generally two categories of rice is available in the market one is the parboiled rice and another one is the what non parboiled rice तो parboiled rice में क्या होता है ना is prepared by soaking raw rice in water for the 2 to 3 days boiling or steaming process they are using and they are using the drying method also and during this process most of the nutrient present in the outer layers of the grains moves to its interior and thiamine and the vitamins are not lost when the outer layers of the rice are removed during the subsequent process and another one is the sprouting and fermenting sprouting and fermenting is the main method sprouting and fermenting and during the sprouting and fermenting of whole grain cereals and pulses increases the B complex vitamins and the vitamin C level also. Sprouting ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସ୍ପ୍ରାଉଟେଡ୍ କରନ୍ତି ଜର୍ମିନେସନ୍ କରନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିଜିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ସେଇଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅଙ୍କୁରିତ କରିକି ଆମେ ଖାଆନ୍ତି B complex ସହିତ ସେଥିରେ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଇବା ଯୋଉଟାକି ବଡିର ଭାଇଟାଲିଟିକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିଥାଏ and mainly the fermentation रे कौन हुए ना fermentation परीक्षा रे आसीबार इट्स आल्सो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन fermentation is the chemical changes taking place in the certain foods when mixed in the ground form with the added fluid and kept overnight in a suitable temperature and during these periods this beneficial bacteria multiplying and grow in the food mixture and bring about some desirable changes fermentation makes the mixture light and fluffy in appearance and more digestible जदि आमे ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ୍ କରନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ and that good bacteria is helpful for the what it's very good for the gut healthy ପାଇଁ ବୋଲି ଏଟା ନିହାତି ଦରକାର and fermentation because of this fermentation process it makes the mixture means it makes the dough very fluffy and light and
that type of fermented food is easily digested in our digestive tract. After digestion of thiamine, the thiamine will be directly enters the bloodstream, and sir. Hello, again sir. ମୁଁ ତ ସାର୍ ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ହଁ ସାର୍। ପଇସା 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 କ'ଣ କହିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ତରକାରୀ ଖାଇନି। ହଁ ହଉ ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍, ଆପଣ ଝିଅ କଥା କହୁଥିଲେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଝିଅ ନାଇଁ, ଆପଣ ଝିଅ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ସାର୍, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ 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 सर। हाँ 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 सर। हाँ हो सर। सर हाँ हाँ सर, ठीक है सर। आगे हो सर। Thiamine is absorbed in the bloodstream, and it is also utilized in the several function. And excess, if we will consume excess amounts of thiamine, and it will be excreted through the urine. Mainly thiamine plays a very important role in the metabolism of the carbohydrate, and thiamine forms a specific coenzyme involved mainly in the carbohydrate metabolism, and the main function of these coenzymes, its role is the burning or oxidation of the glucose to produce the energy. Oxidation of the glucose to produce the energy. This is all about your thiamine. B complex group vitamins टी हमें that what ascorbic acid or vitamin C, and B complex group of vitamins, it includes the vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B9, vitamin B12, and all the cereals that contains the thiamine, that vitamin B1, except the sugar. Sugar, it devoid of thiamine, and fat is also not contains the thiamine. Oil is also devoid of this thiamine, and all the pulses, whole grain cereals and pulses, it contains the thiamine. And in the animal sources of thiamine, like the egg yolk is the very good sources of thiamine, and some cereal pulses is also contains excess amount of thiamine, and
influence of processing on the nutritive value, that means processing of wheat, processing of rice, and sprouting and fermentation. These are the processing way it influence the nutritive value of the thiamine. If we will be um, means during the clean of rice, it will loses its thiamine content. If we will be soaked it for the prolonged periods, and after that if we will be it clean by the running water, it will decreases the level of thiamine. It will lose its. And if we will sprouting the cereals, sprouted the pulses, it will increase the thiamine content of the food. And thiamine is mainly absorbed in the intestine and it enters the bloodstream. And mainly the chief function of thiamine is your what? It metabolize the carbohydrate. This is all about your thiamine. Next class I will discuss about the vitamin B2, vitamin B3, B6, B9, B12. I will discuss about the other water soluble vitamins. Okay, thank you all of you. आज भी जहाँ भी पचार थो जहाँ कहबार थो डाउट्स थो टुमारो यू कैन आस्क मी अदरवाइज आउ किसी प्रॉब्लम रो तो आपण मते परे पचार पारे. ओके, थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you.